is chemical toxicity. The CONDAP heavy water research reactor under construction in Iraq was hit on the 19th of June. As the reactor was not operational and it did not contain any nuclear material, no radiological consequence is expected. The nearby heavy water production plant is also assessed to have been hit. And similarly, no radiological consequence is expected. As stated in the IEA's update of 18th June, at the Tehran Research Center, one building where advanced centrifuge rotors were manufactured and tested was hit. At the Karaj workshop, two buildings where different centrifuge components were manufactured were destroyed. There was no radiological impact internally or externally. Let me now refer to the Bushehr nuclear power plant. This is the nuclear site in Iran where the consequences of an attack could be most serious. It is an operating nuclear power plant, and as such, it hosts thousands of kilograms of nuclear material. Countries of the region have reached out directly to me over the past few hours to express their concerns, and I want to make it absolutely and completely clear. In case of an attack on the Bushehr nuclear power plant, a direct hit would result in a very high release of radioactivity to the environment. Similarly, a hit that disabled the only two lines supplying electrical power to the plant could cause its reactor's core to melt, which could result in a high release of radioactivity to the environment. In the worst case, both scenarios would necessitate protective actions, such as evacuations and sheltering of the population, or the need to take stable iodine with a reach extending to distances from a few to several hundred kilometers. Radiation monitoring would need to cover distances of several hundred kilometers, and food restrictions may need to be implemented. Any action against the Tehran nuclear research reactor could also have severe consequences, potentially for large areas of the city of Tehran and its inhabitants. In such a case, protective actions would need to be taken. I continue to provide public updates about the developments at all these sites and their possible health and environmental consequences. The agency is, as Madam Undersecretary had kindly reminded, is and will remain present in Iran, and inspections there will resume as required by Iran's safeguards obligations under its NPT safeguards agreement as soon as safety and security conditions allow. In this context, let me restate that the safety of our inspectors is of utmost importance. The host country has a responsibility in this regard, and we expect every effort to be made to ensure that their security and their communication lines with the IA. ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी है। मनाज़िर भी आप देख रहे हैं। इसी दौरान एक अहम तरीन खबर यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यह अहम राब्ता हुआ है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और ये कहा है वज़ीर आज़म ने कि पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा है। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबते में कहा है कि पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग का खतरा टालने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सफारती कोशिशों को सराहा और सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इस अहम राबते से मुतालिक ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और साथ ही साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ईरान इसराइल तनाज़े पर भी गुफ्तगू हुई है, मशरिक़ वस्ता के हालात पर भी गुफ्तगू हुई है और ये भी कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि पुरअमन हल इस तमाम तर ईरान इसराइल तनाज़े का निकाला जाए। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर से इंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। सिफारतकारी और पुरअमन हल पर जोर दिया है इसराइल ईरान तनाज़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। अयाज अकबरी सुज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इसी अहम राबते से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। जी अयाज बताइए। देखिए जी, बहुत अहम ये राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोन कॉल की है और वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार भी किया, उनकी क़यादत को जुर्रतमंदाना करार दिया है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा रूबियो की सफारती कोशिशों को भी सराहा है और वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रंप के पाकिस्तान से मुतल्लिक़ मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है और वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तरफ उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है और मकबूजा कश्मीर इंडस वाटर ट्रीटी, तिजारत, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान पुरअमन तरीके से हल करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका को तिजारत, तवानाई, IT और मादियात में ताउन बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान मुल्क भर में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने BLA और TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से कार्रवाई जारी रखने का अज़म दोहराया है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसानी दहशतगर्दी की कोशिशों को भी सराहा है। अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा और वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से वाशिंगटन मुलाकात को मुस्बत करार दिया और पाकिस्तान मिलने का इत्तेफाक भी किया गया है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दोहराई है और वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी जल्द पाकिस्तान आने की दावत दे दी है। मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉल सुनने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को भी सराहा है। पाकिस्तान ईरान के साथ अपनी करीबी ताल्लुकात के जरिए खित्ते में क़याम अमन की किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के करीबी ताउन जारी रखने के हवाले से भी मार्को रूबियो ने गुफ्तगू की है। आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक के अहम राब्ता हुआ है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका हर किस्म के दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर से इंतास मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दोहराई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को भी जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए
कोशिशों को सराहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के जरिए खित्ते में क़याम अमन में किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। ये भी कहा है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने। ये अहम राब्ता हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का, जिसमें कई अहम उमूर पर तफसीली तौर पर बात हुई है। पाकिस्तान और अमरीका को तिजारत, तवानाई, IT और मादनियात में ताउन बढ़ाना चाहिए, यह भी कहा है वज़ीर आज़म ने। साथ ही साथ ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया है वज़ीर आज़म ने। दूसरी जानिब आपको हम बराह रास्त मनासिर भी दिखा रहे हैं जो इजलास जारी है। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी है। 重回外交谈判的呼吁，感谢迪卡洛副秘书长和格罗西总干事的通报。 As the Israel-Iran military conflict enters its 8th day, it is distressing to note that it has resulted in a large number of civilian casualties and damage to facilities on both sides. If the conflict escalates further, not only will both sides suffer greater losses, but the regional countries will also be severely affected. Israel's actions violate international law and the norms of international relations, jeopardize sovereignty and security of Iran, and undermine regional peace and stability. China unequivocally condemns this. Chinese President Xi Jinping has put forward a 4-point proposal regarding the current situation. Chinese Foreign Minister Wang Yi has spoken separately with his counterparts of Iran, Israel, and the regional countries. At this critical juncture, the international community should further forge a consensus and make every effort to promote talks to ease tension. I will make 4 points. First, there must be an immediate ceasefire and an end to fighting. The use of force is not the right way to resolve international disputes. It will only exacerbate hatred and conflicts. The sooner a ceasefire is put in place, the less damage will be done. The situation in the region cannot be allowed to slide into an unknown abyss. The parties to the conflict, Israel in particular, should cease fire as soon as possible to prevent the situation from escalating and to avoid any spillover of the war. Second, the safety of civilians must be ensured. The red line of protecting civilians in armed conflicts must not be crossed at any time, and the indiscriminate use of force is unacceptable. The parties to the conflict must strictly abide by international law, resolutely avoid harming innocent civilians, refrain from attacking civilian facilities, and facilitate the evacuation of third country nationals. Third, we must stay committed to dialogue and negotiation. Communication and dialogue are the right paths to lasting peace. The current conflict has interrupted the negotiation process on the Iranian nuclear issue. The attacks on multiple Iranian nuclear facilities set a dangerous precedent and could have catastrophic consequences. We must not waver in the general direction of a political settlement to the Iranian nuclear issue, and we must persist in returning the Iranian nuclear issue to the track of a political solution through dialogue and negotiation. China welcomes the talk in Geneva among foreign ministers of UK, France, Germany, and the High Representative of EU for Foreign Affairs and Security Policy, and the Foreign Minister of Iran. Fourth, we must bring together the efforts of the international community to promote peace. Without stability in the Middle East, peace in the world would be elusive. The Israel-Iran conflict has led to a sudden escalation of tension in the Middle East and has also had a serious impact on global security. Recently, 21 Arab and Islamic countries issued a joint statement of foreign ministers calling for a ceasefire, resuming talks on the Iranian nuclear issue, and maintaining lasting peace in the region, which China fully supports. The international community, especially major countries with special influence on the parties to the conflict, should make efforts to cool down the situation rather than the opposite.
The Security Council, as the primary body responsible for maintaining international peace and security, should play a greater role in this regard. We support the Council in taking necessary actions in a timely fashion. China stands ready to continue to strengthen communication and coordination with all relevant parties, build synergies, uphold justice, and play a constructive role in restoring peace in the Middle East. Thank you, President. I thank the representative of China for his statement, and I give the floor now to the representative of Pakistan. Thank you, Madam President. I would like to thank Secretary General Guterres for his presence and thoughtful and compelling remarks. Secretary General, you spoke about a defining moment and our collective future, as well as collective responsibility. And we fully agree with you and your call to give peace a chance. And in that context, your appeal to end the fighting and return to negotiations. I'm also thankful to Undersecretary General DiCarlo for her complimentary briefing, as well as the briefing by Director General Grossi. We note in particular his view that diplomatic solution is within reach with necessary political will. Madam President, last Friday, the Council had an emergency session in the wake of Israel's military strikes, violating the sovereignty and territorial integrity of Iran in flagrant violation and contravention of the UN Charter and fundamental principles of international law. 1 week later, as a result of such irresponsible behavior, the situation has only exacerbated, with grave implications for regional and international peace and security. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. We unequivocally denounce the blatant attacks and military strikes carried out by Israel, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond, with serious implications. We offer our sincere condolences and sympathies to the brotherly people of Iran on the loss of life as a result of these unprovoked attacks. The ensuing humanitarian crisis and civilian toll on both sides is also deplorable. International humanitarian law must be complied by all sides. The attacks against nuclear facilities for peaceful purposes are deeply troubling. Such attacks contravene international law, the Charter of the UN, Statute of the IAEA, and relevant IAEA General Conference resolutions on the issue. It is the responsibility of the IAEA to clearly pronounce its legal position with regard to such attacks, as well as to report it to the Board of Governors and to the Security Council about the legal safeguards, safety and security implications of such attacks. The agency should fulfill that responsibility. Madam President, the latest crisis has aggravated the existing tensions in the region, arising from Israel's continuing ruthless assault on Gaza that has resulted in an unprecedented humanitarian catastrophe for the innocent Palestinians, as well as its recurring violations of international law in Syria, Lebanon, and Yemen. The Security Council bears primary responsibility to immediately stop this wanton aggression and hold the aggressor accountable for its actions. The Security Council must fulfill its duty and affirm the following. First, categorical rejection and condemnation of Israel's attacks on the Islamic Republic of Iran since 13th of June and all actions that contravene international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations.
Second, play its due role to end the hostilities and promote de-escalation for achieving a comprehensive ceasefire before the situation spirals out of control and threatens the peace and stability of the entire region. Third, clear denunciation of the targeting of IAEA safeguarded nuclear facilities against the provisions of international law and the UN Charter as reflected in the UN Security Council resolutions, IAEA resolutions, and international humanitarian law, including the Geneva Conventions. The Security Council must implement its own resolution 487. Fourth, call for dialogue and diplomacy to promote a peaceful and lasting resolution of the crisis. Diplomacy must be given a chance. Madam President, regrettably, Israeli unlawful strikes against Iran came at the time of intense diplomatic engagement on Iran's nuclear issue. These illegal actions must not be allowed to scuttle that dialogue. Parties must swiftly return to the path of negotiations, which is the only viable means to reach a sustainable agreement regarding the Iranian nuclear program. We note the willingness expressed by the United States to keep the door for negotiations open. We also take note of the dialogue between the E3 and Iran. We hope that the diplomatic efforts and engagements will bear fruit. We reaffirm our long-standing position that all issues concerning Iran's nuclear program must be resolved peacefully through dialogue and diplomacy in accordance with the rights, international obligations, and responsibilities of all the parties concerned. At the same time, verification activities by the IAEA as the competent international technical organization mandated to implement respective safeguards obligations should continue unimpeded. The IAEA must continue its work in an impartial and apolitical manner to provide objective reporting and credible information regarding the issues under its purview. Madam President, this is a critical moment. The Security Council must fulfill its responsibility and facilitate peaceful resolution of disputes. Military means and coercion cannot bring about a lasting settlement. Dialogue and diplomacy, in full adherence to the principles of international law and the UN Charter, remain the only viable path to resolving this crisis. This Council must therefore unite in support of the Secretary General's call for end to fighting and return to negotiations and dialogue. I thank you. I thank the representative of Pakistan for his statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. Госпожа председатель, признательна Гаянскому председательству за оперативную реакцию на просьбу России. Response to the request from Russia, China, Pakistan, and Algeria to convene this meeting. We thank the UN Secretary General for his opening remarks, as well as the Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs and the Director of the IAEA for their briefings. Madam President, exactly a week has elapsed since the start of the escalation of the Iran-Israeli conflict, which the Security Council discussed on the 13th of June. In this time, the world has been flooded with images depicting the night skies over Tel Aviv and Tehran and other cities lit up with explosions of tens and hundreds of rockets. The apocalyptic predictions have become a reality. People in both countries have been forced to take shelter in hideouts with each passing day. The list of civilian casualties on both sides lengthens. As a result of the closure of the airspace in the region, many third country civilians have become entrapped and they are striving to find a way home. The Iranian peaceful civilian nuclear facilities continue to be targeted, and this is liable to plunge us into a hitherto unseen nuclear catastrophe. The UN Security Council, the principal body for the maintenance of international peace and security, cannot shirk its responsibility and must provide an objective assessment of the situation and to devise an appropriate decision.
We cannot deny the obvious facts. It is indeed Israel which attacked Iran on the eve of the latest planned round of indirect talks between Washington and Tehran. Thereby, West Jerusalem not only demonstrated blatant disregard for the efforts that have been undertaken to seek a diplomatic solution to issues around the Iranian nuclear program, but also demonstrated contempt for its key ally, the United States, which up until recently had been declaring an intent to reach a compromise solution on this matter. It is worth recalling that the Iranian nuclear program is not a scroll secured by 7 seals, indiscernible to the international community. The nuclear facilities and installations in this country are under the safeguards of the IAEA and are continuously subject to scrupulous verification by agency inspectors. Not a single of the member states of this body is under more stringent oversight and scrutiny. Iran has been strictly complying with its obligations under the NPT and the Comprehensive Safeguards Agreement. The Secretariat of the agency's reports have no mention whatsoever about the presence of proliferation risks. So it turns out that Israel has disregarded the assessments of the Specialized International Agency, having on its own authority appointed itself a judge, single-handedly deciding to carry out strikes against a sovereign country with no regard for the UN Charter and international law. Just recently, in the Middle East, a tragic precedent occurred of an invasion into a state under the pretext of alleged presence there of WMDs, which subsequently failed to materialize. It's a pity that the United States, which demonstrated to the entire world this discredited example in 2003, which generated suffering for millions of people, does not wish to learn from its own mistakes. Today, the U.S., yet again, together with the U.K., France, and Germany, is attempting to persuade all parties to believe the groundless fabrications about plans allegedly harbored by Tehran to gain possession of nuclear weapons. Nor can we forget the fact that the attack on Iran was carried out at a time when the entire world observed with horror the ongoing man-made disaster which was unfolding in Gaza and continues to unfold in Gaza, and was condemned the ongoing humanitarian blockade of the Strip and was awaiting the high-level conference in support of the two-state formula under the aegis of the United Nations in accordance with General Assembly resolutions. Instead of reverting back to the sole possible negotiated peaceful settlement in Palestine, Israeli military political leadership raised the stakes and expanded the geography of the conflict in the region. Perhaps the Western Jerusalem's calculations also are to have the new military misadventure detract the international community's attention away from the crimes perpetrated by Tzahal in Gaza and the West Bank. We have seen highly perilous attempts to drag third countries into this confrontation, and this, as was rightly noted by the Secretary General, would have colossal consequences, not just for the stakeholders and the parties engaged, but for the entire region, international peace and security as a whole. We concur with Mr. Guterres' position about the need to avoid internationalization of the conflict. Madam President, the present escalation around Iran did not start yesterday. Having attacked the country, Israel first received a direct pass from a host of Western states. The rhetoric uttered by British, French, and German diplomats in the lofty chambers of the UN Security Council and the IAEA Board of Governors are equally dangerous, just as dangerous as the deadliest weaponry, the blatant blackmail of the leadership of the agency in order to compel it to draft a vague so-called comprehensive assessment on the Iranian nuclear program, pushing through biased anti-Iranian resolutions at the IAEA Board of Governors. All of this made those countries effectively complicit in the Israeli aggression. Let's recall that this specific IAEA report was one of the justifications used by Israeli leadership for the attack on Iraq. What is telling in this connection is a cynical statement from the German Chancellor, Mr. Merz, about, and I quote, Israel doing the dirty work for us. End of quote. The fact that the launch buttons are being pressed by West Jerusalem does not absolve Washington, London, Paris, and Berlin from responsibility for what is taking place.
Russia views the ongoing intense Israeli attacks targeting civilian objects in Iran as completely unacceptable and unlawful under international law. As a result of these reckless actions, unacceptable threats are being posed to international peace and security. Nuclear facilities cannot be targeted by strikes. We demand that West Jerusalem immediately cease attacks and raids on Iran, first and foremost the nuclear facilities which are under the protection of the IAEA. We expect that the agency leadership will draft in short order a detailed written report and response to the reports for consideration of the IAEA Board of Governors and the Security Council with a frank assessment of the damage sustained by Iran's nuclear and energy facilities, as well as the safeguards application in that country, including in the context of the presence of inspectors there, inspectors whose lives were under imminent threat. We take note of the clear Iranian statements about its steadfast commitment to obligations under the NPT and the willingness to resume contact with Washington to forge possible solutions that dispel all baseless suspicions and biases vis-à-vis Tehran's nuclear program under the condition that Israeli attacks cease. We support this position. We share the Secretary General's call for an immediate de-escalation resulting in a ceasefire. We firmly believe that a resolution can be provided for in a sustainable way only through diplomacy and negotiations. The goals of nuclear nonproliferation, whose cornerstone is the NPT, cannot and must not be attained through aggression at the cost of innocent lives. We believe that solutions whereby Iran's right to peaceful nuclear activity and Israel's unconditional safety and security will simultaneously be upheld are feasible and attainable. We have conveyed these options to our U.S. and Israeli colleagues as well as Iranian partners. We stand ready to provide them with the necessary assistance in seeking solutions that are acceptable to all. For now, we still have an opportunity to avoid another devastating war that would have unpredictable repercussions for the entire region and world. We stand ready to seek relevant solutions and decisions at the UN Security Council to engage constructively with all parties who genuinely advocate diplomacy and dialogue. Thank you. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I give the floor to the representative of Algeria. Thank you, Madam President. First, I wish to express our appreciation to you for convening this urgent meeting, the second within a week, which underscores the seriousness of the situation before us. I thank the Secretary General for his remark and his personal engagement toward peace and stability in the region. And we echo your call for dialogue and for ending the fighting. I also thank USG DiCarlo and Director General Grossi for their briefings. Madam President, Israel's attack against Iran is an unprovoked and unjustified act. It constitutes a flagrant violation of the Charter of the United Nations. This is an attack on nuclear facilities under IAEA safeguard. If these safeguards, if these guarantees, and even the presence on the ground of international inspectors cannot guarantee the protection of such installations, then the credibility of the entire nuclear non-proliferation regime is called into question. If those entrusted with upholding this regime are unable or unwilling to condemn and denounce such violations, they must ask themselves,
What is their purpose? And are they truly fulfilling their responsibilities? We must resist any attempt to justify what in essence is an act of aggression against a sovereign member state of the United Nations. Any misleading narrative is unacceptable. As Director General Grossi stated in an interview with CNN, we, the IEA, did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. End of quote. These words merit our full attention. Madam President, it is imperative that everyone returns to a path of reason. Negotiation between the E3, the European three, and Iran. Negotiation between US and Iran with the facilitation of Oman remain a viable and a constructive option available for diplomacy. Algeria has always believed in the power of dialogue, and we echo the call of the Secretary General in this regard. Even in time of heightening tension, mediation and Charter's principle remain our unique, viable tools. Let me quote the Charter. All members shall settle their international dispute by peaceful means. End of quote. Madam President, international humanitarian law is clear. Nuclear power plant enjoy specific protection and shall not be made the object of attack. Attacks against such facilities are prohibited. If there remains a risk of radioactive material spreading from the impacted facilities, the potential danger extends well beyond borders, endangering civilian populations across the region. For my country, Algeria, there can be no double standard, no double standards when it comes to respecting international humanitarian law. Civilian and civilian infrastructure must be protected everywhere and under all circumstances. We have consistently warned against violation of international humanitarian law, notably in Gaza, where tragically violating IHL became the norm. Today, the same patterns of conduct are being repeated and repeated again. When we reiterate in the strongest term our condemnation of all violation of international humanitarian law, the protection of civilians is not optional. It is an obligation. Upholding international humanitarian law is a matter of preserving our shared humanity. However,
those responsible for the collapse of the health system in Gaza, for the killing of 1,580 health workers, for the killing of over 18,000 children and more than 10,000 women, for the killing of 225 journalists, and for the killing of 467 humanitarian workers, cannot credibly claim. ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी है। पाकिस्तान ने कहा है कि काउंसिल अपना किरदार अदा करे और ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करे। और अब जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है बेल इन्वर्टर सेविंग्स का स्मार्ट सॉल्यूशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ अपने क़रीबी ताल्लुकात के ज़रिए खित्ते में क़याम अमन में किरदार अदा करता रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर ज़िंताज़ मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बातचीत होनी चाहिए। BLA, TTP समेत दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से क़रीबी ताउन जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। सलामती काउंसिल इजलास में खिताब में एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरान बार बार कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा है। आज सलामती काउंसिल से अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। चीन के सफ़ीर ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। फ़रीक़ैन IAEA गैर जानिबदाराना तौर पर काम करें। रूसी सफ़ीर का भी ईरान इसराइल जंगबंदी का मुतालिबा। और इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की। पूरी ताकत के साथ दिफा करने के लिए पुरआज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये निज़ाम ज़मीं बोस हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से कुछ देर में जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर का कहना है कि उम्मीद है यूरोपीय ममालिक मुज़ाकरात में ईरान से जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालिबा करेंगे। गिरो उठो ट्राई, फिर से गिरो उठो ट्राई। धोए इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। और अब नया पाकिस्तान। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स की प्लेफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। हमारी फैमिली की रियल फ्रेशनेस जो रखे सबको कूल, हमेशा से माय गुड फॉरएवर कंपेनियन। GFC एयर कूलर के इंपोर्टेड कूलिंग जेल पैक्स और लॉन्ग रेंज स्विंग टेक्नोलॉजी से फील द क्लीन, फ्रेश और ताजा हवा एनीवेयर। GFC आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। GFC बेहतरीन पीयू की। तो हो जाए पाकिस्तान के नाम टपाल दानेदार का एक और कप।
टेलेनॉर समर गाला से डिस्काउंट इतना हैवी 2300 की मंथली ऑफर अब 1500 में मिले। टेलेनॉर के अलावा कौन दे सकता है ऐसी डील। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। इसका खस्तापन और चटपटा है फन, भले भले दाल चस्का, मजा अपने स्टाइल में। शाही का है तो अच्छा ही होगा। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। पानी में खुद कफालत पाकिस्तान की बका का मामला है, जिसके लिए देवमेर भाषा डैम